Hello and welcome back to Engineers Olympiad, where learning meets success. This video lecture is about designing of steel trussed bridges. इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी डिज़ाइन स्टील ट्रस्ट ब्रिजेस. अब स्टील ट्रस्ट ब्रिजेस होते क्या है? जब हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में फंडामेंटल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, दोज वीडियोस आर ऑलरेडी अप ऑन द चैनल. यू कैन वॉच दोज वीडियोस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है बेसिक 7 फॉर्म्स ऑफ ब्रिजेस. जबकि पहला होता है बीम ब्रिज या गर्डर ब्रिज. We have essentially 7 basic forms of bridge superstructures: beam bridge or girder bridge. Second one is truss bridge. Then we have arch bridge. Alright, इसके बाद हमारे पास होता है cantilever bridge. These are basic 7 forms of bridges based on their superstructures. Then we have a cable stayed bridge. Suspension bridge. And then we have tied arch bridge, which is also known as bowstring bridge. Bowstring bridge or tied arch bridge. Alright, ये सारे forms, basic 7 forms of bridges जो है ये हमने already discuss कर रखे हैं. आप वो वीडियो लेक्चर्स देखिएगा ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले. अब आज का टॉपिक है वी हैव टू डिज़ाइन अ स्टील ट्रस्ट ब्रिज. जब हमने ट्रस्ट ब्रिज पढ़ा, there we discussed that in a truss bridge deck remains supported by means of steel trusses. And what are trusses? Trusses are interconnected triangular units जो हम form करते हैं so that the structure has exceptional stability, and a deck of a bridge in case of a truss bridge remains supported by means of these trusses, triangular units which are interconnected trusses. These are the interconnected triangular units, a framework which is formed by interconnection of framework जो बनता है interconnection of units से structural units which form triangles. and वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये ज्योमेट्री इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ देती है, and they are very effective in distributing loads evenly. Truss bridges, they distribute loads evenly. और ये भी खासियत होती है ट्रसेस की that they have the capability of absorbing both tension as well as compression. ये टेंशन भी एब्जॉर्ब करते हैं और compression भी एब्जॉर्ब करते हैं. इनके जो टॉप कॉर्ड मेंबर्स होते हैं दे आर इन compression, जो इनके बॉटम कॉर्ड मेंबर्स हैं वो होते हैं टेंशन में. अब जो डायगोनल मेंबर्स होते हैं they can be either in tension or compression, that depends upon their orientation. अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो हमने सब डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर रखा है. Alright, so a steel truss bridge is a bridge in which the bridge deck remains supported by means of steel trusses. अब ये जो steel trussed bridges है ये economical होते हैं in the span range between 100 to 200 meters. These steel trussed bridges, they are economical in the span ranging between 100 to 200 meters. Wherein we have spans ranging between 100 to 200 meters, वहाँ पे ये steel trussed bridges काफ़ी economical होते हैं. और इन तरह के bridges को prefer किया जाता है long span railway bridges के लिए. Long span railway bridges. Alright? वहाँ पे इन स्टील ट्रस्ट ब्रिजेस को काफ़ी प्रेफर किया जाता है. अब ट्रस्ट ब्रिजेस इकोनॉमिकल होते हैं सिंस द मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू
direct forces, and the open web construction facilitates the use of larger depths. I write it down for you. These trussed bridges are economical since the members are subjected to direct forces, और जो ओपन वेब कंस्ट्रक्शन है वो फैसिलिटेट करता है यूज ऑफ लार्जर डेप्थ्स, and that gives rise to reduction in self weight. ओपन वेब कंस्ट्रक्शन, जब हमें ये स्टील ट्रस्ट ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उससे जो हमें यूज ऑफ लार्जर डेप्थ्स वी कैन गो फॉर यूजिंग लार्जर डेप्थ्स, एंड दैट विल सब्सिक्वेंटली रिड्यूस द सेल्फ वेट ऑफ दीज ट्रसेस. तभी ये इकोनॉमिकल होते हैं इन द स्पैन रेंजिंग बिटवीन 100 to 200 मीटर्स. और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील ट्रस्ट ब्रिजेस है ये काफ़ी फास्ट होती है. क्यों? क्योंकि एक तो इसके ऑलरेडी डिस्कस किया लाइटनेस ऑफ इट्स मेंबर्स, अनलाइक बीम ब्रिज और अ गर्डर ब्रिज जिसका काफ़ी ज़्यादा सेल्फ वेट होता है. लाइटनेस ऑफ इट्स मेंबर्स, इसकी वजह से ये जो स्टील ट्रस ब्रिजेस है ये काफ़ी जल्दी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. और फैब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स एट साइट, हमने पहले ही डिस्कस किया कि बिकॉज ऑफ ओपन वेब कंस्ट्रक्शन वी कैन गो फॉर लार्जर डेप्थ्स एंड दैट विल रिड्यूस द सेल्फ वेट ऑफ दीज ट्रसेस. दैट मीन्स कि ये जो स्टील ट्रस ब्रिजेस है या स्टील ट्रस ये जो फ्रेमवर्क है ये काफ़ी आसान होता है और काफ़ी जल्दी फैब्रिकेट किया जा सकता है साइट पे. क्योंकि पहली खासियत इसके जो ये मेंबर्स होते हैं ये लाइट होते हैं, देयर इज लाइटनेस ऑफ मेंबर्स. एंड सेकेंड वन, जो जॉइंट्स है जिनसे आपको ये डिफरेंट यूनिट्स इंटरकनेक्ट करने हैं, दे आर और दे कैन बी fabricated at site. Alright. मगर हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया जब हमने डिस्कस किया बेसिक फॉर्म ऑफ अ ट्रस ब्रिज wherein we discussed in detail its various advantages. यहाँ पे मैं वो उतना नहीं बता रही हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप वो वीडियो देखिए. वहाँ पे हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनके डिटेल में डिस्कस किए हैं ट्रस ब्रिजेस की. लेकिन पर्टिकुलरली एक डिसएडवांटेज है जो काफ़ी भारी पड़ता है इसकी, या कहेंगे इसकी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक वो इम्पैक्ट करता है. और वो चीज़ है दैट वी हैव टू गो फॉर पीरियोडिक पेंटिंग ऑफ दीज ट्रसेस. क्रोजन वगैरह से बचाने के लिए हमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं स्टील ब्रिज के वो हायर होते हैं सिंस द मेंबर्स हैव टू बी पेंटेड पीरियोडिकली टू प्रिवेंट देयर डिट्यूरिएशन ड्यू टू रस्टिंग. रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए ताकि हमारे जो स्टील मेंबर्स है वो डिट्यूरिएट ना हो जाए, हमें पीरियोडिकली इनकी पेंटिंग वगैरह करनी पड़ती है. उससे जो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट है स्टील ट्रस ब्रिज के वो बढ़ जाते हैं. अब टाइप्स ऑफ ट्रसेस क्या है? ट्रसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. Warren Truss, Pennsylvania, K-type, Baltimore, etc. We have various types of trusses. Like Baltimore, we have K-type, we have Warren Truss, पेंसिल्वेनिया, बहुत सारे होते हैं. बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टील ट्रस जो ब्रिजेस में यूज किया जाता है वो है वॉरेन ट्रस. ऑलराइट, एंड दिस टाइप ऑफ अ ट्रस कैन बी यूज्ड बोथ in deck type bridges as well as through type. So the type of truss that we use in steel trussed bridges is
a Warren truss, and that can be advantageously used both for deck type bridges as well as for through type bridges. अब ये Warren truss होता क्या है? A Warren truss is a type of a truss which is characterized by alternating diagonal members to form a series of equilateral triangles. I'll write it down. Warren truss. A Warren truss is a type of truss that is characterized. It is characterized by its use of alternating diagonal members to form a series of equilateral triangles. Alternating diagonal members to form series of equilateral triangles, which are then connected to longitudinal members. Triangles which are then connected to longitudinal members. So that is a Warren truss, which is characterized by the use of alternating diagonal members to form a series of equilateral triangles which are then connected to the longitudinal members. I'll show one diagram of a Warren truss. This is a Warren truss. These are the alternating diagonal members and the series of equilateral triangles are formed. This is the top chord, bottom chord, diagonal members. So the truss which is characterized by use of alternating diagonal members, और बनाना क्या होता है? Series of equilateral triangles. उस type of truss को बोलते हैं Warren truss. अब Warren truss की खासियत क्या है? Warren truss employs a weight saving design based upon equilateral triangles. ये जो ये सीरीज ज्योमेट्री है इसकी, जिससे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं, इससे इनका जो सेल्फ वेट है वो कम होता है. Hence it is a weight saving design. And this type of a truss, Warren truss, it is named rather after British engineer James Warren, जिसने ये ट्रस पेटेंट किया था साल 1848 में. So this Warren truss is named after British engineer James Warren, who patented this type of a truss in the year 1848. So this was about the Warren truss, which is a truss wherein it's characterized by use of alternating diagonal members to form a series of equilateral triangles which remain then connected to the longitudinal members. All right. So the common type of truss जो हम यूज करते हैं स्टील ट्रस ब्रिजेस के लिए वो है वॉरेन ट्रस. और कॉन्फ़िगरेशन या डायग्राम मैंने आपकी दिखाई मैंने आपको. ऐसा होता है ये वॉरेन ट्रस, जिसमें ये टॉप कॉर्ड है, ये बॉटम कॉर्ड है, और ये ऑल्टरनेटिंग डायगोनल मेंबर्स है जो बनाते हैं सीरीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. ऑलराइट. और इसकी यही खासियत है कि इसका इस ज्योमेट्री से इसकी वेट कम होता है मेंबर्स का, और हम कहेंगे कि वेट सेविंग डिज़ाइन है. ऑलराइट. और वो हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर रखा कि स्टील ट्रस ब्रिज की यही खासियत है कि ये काफ़ी जल्दी हम बना सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी लाइट होते हैं और जॉइंट्स भी फैब्रिकेट हो सकते हैं साइड पे ही. अब स्टील ट्रस्ड ब्रिज के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? स्टील ट्रस्ड ब्रिज, इट कंसिस्ट ऑफ 1. फ्लोरिंग, 2. stringer beams, 3. cross girders, and which remain essentially supported by main truss system. Yeah, framework. So the steel type trussed bridge, it consists of flooring, stringer beams, and cross girders, which remain supported by the main truss system or the main truss framework. All right.
अब जो ये फ्लोरिंग है, this is made up of steel plates or reinforced concrete slab. Let me rub it first. So the flooring in case of a steel trussed bridge is made up of, हम बना सकते हैं या तो स्टील प्लेट्स ही डालेंगे या तो reinforced concrete slab का इस्तेमाल करेंगे. So flooring in case of a steel trussed bridge, ये हो सकती है या this can be made either of steel plates या हम यूज करेंगे reinforced RCC concrete slab. Alright. पर जनरली हम RCC reinforced concrete slab ही प्रेफर करते हैं because of its rigidity. Alright. अब डिजाइन फीचर्स क्या होते हैं स्टील ट्रस्ड ब्रिजेस के. अब हमें डिजाइन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डिजाइन फीचर्स क्या है. So this is the design features of a steel trussed bridge. Design features. अब जो ये डेक स्लैब है, जैसा कि मैंने बोला कि फ्लोरिंग या तो स्टील प्लेट्स की जाते है या तो RCC reinforced concrete slab की भी कर सकते हैं, बट जनरली हम वी प्रेफर going for reinforced concrete slabs because of its high rigidity. अब ये जो डेक स्लैब है, it is designed as a two-way slab to support. अब ब्रिज डेक पे कौन से लोड्स आते हैं, ये सारे वर्टिकल लोड्स which are then transferred to the foundation below. अब इस डेक स्लैब को हम डिजाइन करते हैं एज अ टू-वे स्लैब टू सपोर्ट IRC लोड्स. अब इंडियन रोड्स कांग्रेस के हिसाब से लाइव लोड्स के जो 4 कैटेगरीज है, उनके हिसाब से वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछेगा या हमें ब्रिज डिज़ाइन किस पर्टिकुलर IRC लोडिंग के लिए करना है. तो उन लोड्स को सपोर्ट करने के लिए द डेक स्लैब इन केस ऑफ अ स्टील ट्रस ब्रिजेस इज डिजाइंड एज अ two-way slab. And I told you, we have discussed it earlier in some video lecture, that the two-way slab is used by using Piaget's theory. Piaget's theory or Piaget's theory, howsoever you may like to pronounce it. So two-way slab को डिजाइन किया जाता है किस बेसिस पे? On the basis of theory given by Piaget, by using those Piaget's curves. वो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल में. अब जो दूसरा कंपोनेंट है स्ट्रिंजर बीम्स, ये जनरली होते हैं रोल्ड स्टील जॉइस. These stringer beams are generally rolled steel joists and they are designed to resist the dead and the live loads on the beams. They have to resist both dead as well as live loads on the beams. Alright. इस पे किस तरह के डेड लोड्स होंगे, किस तरह के लाइव लोड्स होंगे, दोनों को इसको सपोर्ट करना है. एंड दिस इज यूजुअली स्ट्रिंजर बीम जो हम लगाते हैं स्टील ट्रस ब्रिज में, वो होते हैं रोल्ड स्टील जॉइस के. अब बचता है थर्ड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं क्रॉस गर्डर. और वो क्रॉस गर्डर डिज़ाइन किए जाते हैं एज प्लेट गर्डर्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो that cross girders in case of a steel trussed bridges are designed as plate girders. जैसे हम एक प्लेट गर्डर ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही हम इस क्रॉस गर्डर्स को उनको डिज़ाइन ही किया जाता है एज प्लेट गर्डर टू रेजिस्ट द लोड्स जो इन पे आते हैं या ट्रांसमिट करते हैं कोड स्ट्रिंजर बीम्स. टू रेजिस्ट लोड्स transmitted by stringer beams. All right. अब जो मेन ट्रस अब इसके बाद बचता है, we have essentially 3 components of a steel truss bridge: the flooring or deck slab, जो भी आप इनको बोलेंगे, क्योंकि हम यूजुअली डेक स्लैब ही यूज़ करते हैं. उसके बाद स्ट्रिंजर बीम्स और उसके बाद क्रॉस कटर्स. अब इन तीनों को सपोर्ट करता है एक मेन फ्रेमवर्क जो कि ट्रस फ्रेमवर्क होता है. अब उन मेंबर्स को या मेन ट्रस मेंबर्स को डिज़ाइन किया जाता है ये अज्यूम करके
They are designed on the assumption that the members are subjected to axial forces. And that too, the loads are applied at nodal points. Alright? तो मेन ट्रस्ट मेंबर्स को डिज़ाइन किया जाता है on the basis of assumption that the members are subjected to axial forces and the loads are applied at nodal points only, not on any intermediate point. Alright? तो इस इन assumptions के basis पे हम मेन ट्रस्ट मेंबर्स ऑफ अ स्टील ट्रस्ट ब्रिज को डिज़ाइन करते हैं. अब कुछ कंडीशंस है या कुछ जनरल डिज़ाइन फीचर्स. पहला है, हम डिज़ाइन फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, और पहला है कि द डेप्थ ऑफ ट्रस for a highway bridge is generally in the range of 1/6 to 1/20 of span. And this is for highway bridges, all right? And for railway bridges, ये स्टील ट्रस ब्रिजेस जैसे कि पहले ही हमने डिस्कस कर रखा, काफ़ी यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग स्पैन रेलवे ब्रिजेस के लिए. स्टील ट्रस ब्रिजेस का ही they choose the use of steel truss bridges for designing or for going for long span railway bridges. अब जो डेप्थ है for truss for a highway bridge वो generally रखी जाती है in a range between 1/6 to 1/20 of a span, and for railway bridges it ranges from 1/5 to 1/10 of a span. Alright? और दूसरी 1/5 to 1/10. Alright? और पैनल लेंथ जो है, सिंस हम कॉमनली कौन सा ट्रस यूज़ करते हैं स्टील ट्रस्ट ब्रिजेस के लिए, वॉरेन ट्रस. अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली सब समझाऊंगी. अब जो पैनल लेंथ है उसमें वो इस तरह से सिलेक्ट की जाती है कि जो स्लोप ऑफ डायगोनल्स है वो लेस देन 45 डिग्री ना रहे विद द हॉरिजॉन्टल. ऑलराइट, these are designed in such a way so that, or I may say that कि पैनल लेंथ को कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि जो स्लोप ऑफ द डायगोनल्स है, डायगोनल मेंबर्स जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, but it should not be less than 45 degrees with the horizontal. So this was something about the steel truss bridges and its components and how do we design them. Now let's take an example and go for designing such a bridge, a steel trussed bridge. All right. Question number 1. अब क्वेश्चन है, हमें कुछ ऐसी की कुछ लोडिंग दी गई होगी, उसी के हिसाब से हमें अपना जो है स्टील ट्रस ब्रिज उसको डिज़ाइन करना है. क्वेश्चन इज, डिज़ाइन अ स्टील ट्रस ब्रिज. Design a steel trussed bridge to suit the following data. Data है effective span is 30 meters. Roadway is 7.5 meters या carriageway width भी बोला जाता है इसको. It is 7.5 meter 2-lane. It's a 2-lane bridge. Then curbs 600 mm. Loading is IRC class AA tracked vehicle. इसके अलावा बोला गया है that the materials you will be using M25 grade concrete,
M25 grade concrete, and we have to use Fe 415 HYST bars for deck slab. All right. So this is the question. Design a steel truss bridge to suit the following data. Effective span is 30 meters. Roadway or carriageway width is 7.5 meters. It's a two-lane bridge. Curb 600 mm. Loading is IRC. Class AA tracked vehicle, and we have to use M25 grade concrete and Fe415 HYSD bars for deck slab. In addition to that, इसने एक और first you go on noting the question, I rub it, and one more detail has been given, or data for that matter, और वो बोला गया है कि rolled steel sections with within yield stress of 236 Newton per mm square, conforming to IS 226 and IRC 24 are available for use. IRC are available for use. सो हमें इस स्टील ट्रस ब्रिज को डिज़ाइन करना है, जिसका डेटा हमें वहीं से देकर है. पहला है इफेक्टिव स्पैन जो कि है 30 मीटर्स. उसके बाद है रोडवे, वो है 7.5 मीटर कैरेजवे विड्थ एंड इट इज़ अ 2-लेन ब्रिज. उसके बाद इसने बोला गया था कि क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो है कि कर्व से 600 mm. लोडिंग है IRC क्लास AA एंड दैट टू ट्रैक्ड व्हीकल नॉट व्हील्ड. And materials, we have to use M25 grade concrete, and we have to use Fe415 HYSD bars. And in addition to that, one more data that is given is that the rolled steel sections with a yield stress of 236 Newton per mm square, conforming to IS 226 and IRC 24 are available for use. I hope आपने question note किया, so that now we'll proceed with the solution. अब step by step हमें इस steel truss bridge को design करना है. And the first step in designing any bridge is preliminary. The first step is preliminary design and arrangement of members. Preliminary design and arrangement of members. All right. हमें बोला जा रहा है कि आप एक स्टील ट्रस ब्रिज को डिज़ाइन कीजिए, जिसका डेटा इसने दे दिया. मैंने आपके साथ शेयर भी किया क्या डेटा है, आपने नोट डाउन भी किया. इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप जो है इस डिज़ाइनिंग प्रोसेस का, वो है प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स. स्पैन कितना बोला है इसने? इफेक्टिव स्पैन ही इज सेइंग 30 मीटर्स. जनरली मैंने अभी डिस्कस किया कि हम कौन सा टाइप ऑफ ट्रस इनकॉर्पोरेट करते हैं या मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग स्टील ट्रस ब्रिजेस. वी यूज़ अ वॉरेन ट्रस. So for a span of 30 meters, we will provide a wooden truss with 6 panels. This is my wooden truss, which is the most commonly adopted form of truss. We have many forms in case of steel truss bridges because it's a weight-saving design, as already discussed, and it's characterized by the use of these diagonal members which form a series of equilateral triangles. अब इफेक्टिव स्पैन क्वेश्चन ने बोला है 30 मीटर्स है, तो हम प्रपोज कर रहे हैं कि हम वॉरेन टाइप ट्रस यूज करेंगे with 6 panels of 5 meters each. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the 6 panels, each of 5 meter. So 6 multiplied by 5 is 30. And my effective span of the steel trussed bridge is getting
covered. So I'll write it down. For a span of, this is the first step of designing a steel truss bridge, that is preliminary design and arrangement of members. So for a span of 30 meters, it is proposed to provide a Warren truss with six panels of 5 meters each. इसके बाद हमारे स्टील ट्रस ब्रिज के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला फ्लोरिंग, दूसरा स्ट्रिंजर बीम्स, तीसरा क्रॉस गर्टर्स, और सब रहते हैं सपोर्टेड बाय मींस ऑफ अ ट्रस फ्रेमवर्क. Alright, so for this question I am proposing that we'll provide a Warren truss with 6 panels of 5 meter each to cover an effective span of 30 meters. उसके बाद जो क्रॉस गर्टर्स है, we'll provide them at 5-meter interval joining the nodal points. This is the cross section of my preliminary design, wherein I am proposing कि हम Warren truss लेंगे जिसके 6 पैनल होंगे 5 मीटर ईच to cover the span of 30 meters. और उसके बाद जो क्रॉस गर्डर्स है, I'll provide them at 5-meter interval joining the nodal points. जहाँ पे भी nodal point है, वहाँ पे after every 5 meter I'll go on placing my cross girders. उसके बाद मुझे stringer beams का भी इस्तेमाल करना है. In this question I'll assume that I'm using 5 number of stringer beams. 5 stringer beams, alright? 5 stringer beams मैं इस question के लिए propose कर रही हूँ या assume कर रही हूँ कि I'll go for 5 stringer beams. और ये मैंने यहाँ पे cross section of deck में भी दिखाया है. I have placed 5 stringer beams. This is 1, 2nd, 3rd, 4th and 5th. So I have 5 stringer beams. Now I am proposing that I'll go for 5 stringer beams. और वो मैंने आपको दिखाया भी cross section में, that the number of stringer beams that we are assuming for this design is 5. Are 5. 1, 2, 3, 4 and 5. अब let me rub it first and we'll calculate the spacing क्या रखेंगे इन stringer beams के दरमियान. जो हमने assume की कि हम 5 stringer beams का इस्तेमाल करेंगे इस steel truss bridge के लिए, तो अब हमें spacing क्या रखनी है. Now spacing between stringers. Spacing between stringers or stringer beams. How much is my carriageway width or roadway? 7.5 meters. मैंने कितने assume किए? 5. I assume that I'll go for 5 number of stringer beams. So 5 minus 1. This should be the spacing between my stringer beams. And by calculation, this comes equivalent to 1.875 meters. हमारा जो carriageway है वो 7.5 मीटर है, जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है. ये 2 लेन ब्रिज है. हमने अज्यूम किया कि हम 5 स्ट्रिंजर बीम्स को का इस्तेमाल करेंगे, 5 नंबर ऑफ स्ट्रिंजर बीम्स. तो स्पेसिंग कितनी रखेंगे स्ट्रिंजर बीम्स के दरमियान? दैट इज कैरेजवे डिवाइडेड बाय द नंबर दैट आई एम अज्यूमिंग -1, और वो बाय कैलकुलेशंस आता है 1.875 मीटर. सो stringers or stringer beams, 5 number of stringer beams are used and they are placed at 1.875 meter center to center. ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ. These are my stringer beams 1, 2, 3, 4 and 5, and I have placed them at a distance of 1.875 or 1875 mm. ठीक है, तो स्पेसिंग इनके दरमियान है 1.875 मीटर्स. ठीक है, इसके अलावा मैंने अज्यूम किया है जो थिकनेस ऑफ डेक स्लैब है वो है 200 mm और जो वेयरिंग कोड की थिकनेस है वो है 100 mm. ये भी मैं लिखती हूँ यहाँ पे, बट आई रब इट फर्स्ट. सो मैंने अज्यूम किया कि इफेक्टिव स्पैन ऑफ 30 मीटर के लिए आई हैव प्रपोज दैट
we'll go for a warren type truss जिसमें 6 पैनल रहेंगे और हर एक पैनल की लेंथ होगी 5 मीटर्स की और क्रॉस गर्डर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हर 5 मीटर के इंटरवल के बाद और वो कनेक्ट करेंगे या ज्वाइन करेंगे नोडल पॉइंट्स में. इसके अलावा मैंने अज्यूम किया हम 5 स्ट्रेंजर बीम्स लगाएंगे स्टील ट्रस ब्रिज के और उनकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दैट came equivalent to 1.875 meters. इसके बाद in preliminary design I have also assumed that the thickness of deck slab is 200 mm and the thickness of wearing coat is 100 mm. 100 mm का wearing coat हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया, राइट. और कर्व्स वो तो वहीं से दिया गया है क्वेश्चन में ही, डेटा में ही कि वो 600 mm है, ठीक है. इसके बाद तैयार होती है मेरी ये पिक्चर और ये डायग्राम विच इज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ डेक. सो दिस इज़ अ स्टील ट्रस, दिस इज़ माई कर्व which by data itself is 600 mm. This is the clear roadway or the carriageway width, which is 7.5 meters. All right. This is another curve on this side. This is curve on this side. Both are 600 mm. My deck slab, I have assumed that the thickness of deck slab is 200 mm and the thickness of my wearing coat is 100 mm. I have assumed that I'll place 5 stringer beams, 1, 2, 3, 4 and 5, and they will be placed at a distance of 1.875 meters center to center, and cross girders are placed at every 5 meter intervals and they will join at nodal points. All right, so this is the first diagram in my designing process wherein after assuming the preliminary dimensions I have sketched this cross section of deck. all right. अब ये जो preliminary dimensions है ये assume किया जाता है based on experience. all right, and this may be checked because we are designing, we'll check for various things. और अगर if it doesn't satisfy our design criteria, then we'll modify it as per the necessity. ठीक है, ये preliminary dimensions सब ये लिया जाता है, it's all based on experience. all right, and if it doesn't fulfill our criteria or the checks don't come out satisfactory, then we'll go on modifying till our design criteria is met. उसके बाद ये था स्टेप नंबर 1 हमारे डिजाइनिंग प्रोसेस में. उसके बाद स्टेप नंबर 2 है वी हैव टू डिजाइन दिस डेक स्लैब. ऑलराइट, डिजाइन ऑफ डेक स्लैब. अभी हमने पढ़ा डिज़ाइन फीचर्स में कि ये जो डेक स्लैब होती है स्टील ट्रस्ट ब्रिज में ये डिज़ाइन की जाती है एज अ 2-way स्लैब बेस्ड ऑन Pichot's theory by employing the M. Pichot's curves. all right, so the slab is supported on 4 sides by beams. The slab is supported on 4 sides by beams. इसके बाद पहला स्टेप है वी हैव टू गो ऑन टू कैलकुलेट द डेड लोड. उसके लिए पहला है सेल्फ वेट ऑफ डेक स्लैब. that is the thickness multiplied by the unit weight. How much I have assumed my thickness? 200 mm. So 0.2 multiplied by the self weight or the unit weight. This is kilonewton per meter cube. This is meter. By calculations, this is 4.8. Unit will be kilonewton, because this and this will go meter square. all right, so the first step is to find the self weight of deck slab, which is thickness multiplied by the unit weight. So it's 0.2 multiplied by 24 kilonewton per meter cube, so it comes equivalent to 4.8 kilonewton per meter square is the self weight of our deck slab.
इसके बाद यही सेल्फ वेट निकालना है किसका, वेयरिंग कोट का, या वेयरिंग कोर्स भी बोलते हैं, वेयरिंग कोट भी बोला जा सकता है या वेयरिंग कोर्स भी बोल सकते हैं. सो द सेल्फ वेट ऑफ वेयरिंग कोट और वेयरिंग कोर्स इज, कितनी रखी हमने थिकनेस वेयरिंग कोर्स की, 100 mm, सो 0.1 मीटर, और इसका यूनिट वेट जो होता है वो 22 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है, एंड बाय कैलकुलेशंस इट इज 2.2 kilo Newton per meter square. So we calculated the self weight of deck slab, सेल्फ वेट ऑफ डेक स्लैब भी कैलकुलेट किया, सेल्फ वेट ऑफ वेयरिंग कोट भी वेयरिंग कोट या कोर्स भी बोला जा सकता है, वो भी कैलकुलेट किया. फर्स्ट वन वॉज 4.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड वन केम इक्वलेंट टू 2.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब टोटल डेड लोड कितना बनता है, टोटल सेल्फ वेट लोड या जिसको डेड लोड भी बोला जा सकता है, ये है टोटल डेड लोड, ये है 4.8 प्लस 2.2, weight of the deck slab plus weight of the wearing course, and this is equivalent to 7 kilonewton per meter square. इस वैल्यू को आप याद रखिएगा. टोटल डेड लोड हमारा बन के आता है 7 kilonewton per meter square. उसके बाद ये था डेड लोड. लाइव लोड के बारे में क्या कहा है, लाइव लोड का वहीं से इसने बोला है कि वी हैव टू डिजाइन द स्टील ट्रस ब्रिज एज पर द IRC क्लास AA loading, and that to tracked vehicle. All right. Ab live load is, I write it down. Live load is IRC class AA tracked vehicle, IRC class AA tracked vehicle with two tracks of 3.6 meter long and 0.85 meters long. Wide. Carrying a load of 350 kilonewton. All right. अब डेड लोड तो हमने कैलकुलेट किया, विच वाज सेल्फ वेट और द डेड लोड ऑफ डेक स्लैब प्लस डेड लोड ऑफ द वेयरिंग कोट, दैट केम इक्वल टू 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद लाइव लोड्स के लिए भी बेंडिंग मोमेंट्स को हमें देखना है क्या होता है. उसके लिए क्वेश्चन में वही डेटा में ये बोलता है कि यू हैव टू डिजाइन द स्टील ट्रस ब्रिज एज पर IRC क्लास AA ट्रैक्ड व्हीकल. उसमें होते हैं 2 ट्रैक्स, एक होता है 3.6 मीटर लॉन्ग और विड्थ होती है 0.85 मीटर, और लोड कैरी किया करते हैं वो 350 किलो न्यूटन. क्योंकि अगर आपको पता होगा IRC क्लास AA में टोटल ट्रैक्ड व्हीकल की बात कर रही हूँ मैं, विच सिमुलेट्स अ कॉम्पैक्ट आर्मी टैंक, उसमें उसका टोटल वेट होता है 700 किलो न्यूटन. तो एक ट्रैक के लिए बनता है डिवाइड बाई 2 विच इज 350 किलो न्यूटन. ऑलराइट. अब इम्पैक्ट फैक्टर की बात करते हैं हम. इम्पैक्ट फैक्टर क्या लेंगे हम इस क्वेश्चन में. Alright, it is 25% or 0.25. Why? Because as per the codes, IRC codes, when floor system and main girders having effective span of less than 9 meters for both RCC bridges or steel bridges, वहाँ पे हम impact factor लेते हैं 25%. I'll rub it first and I'll write about impact factor. Impact factors are taken as 25% or 0.25 when we have the floor system and main girders having effective span less than 9 meters. Alright, जहाँ पे हमारा floor system and main girders जो है उनका अगर having effective span less than 9 meters, यहाँ पे मेन गर्डर्स और फ्लोर सिस्टम के दरमियान जो इफेक्टिव स्पैन है वो कम ही है 9 मीटर से, उससे ज़्यादा नहीं है. एंड प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विद द इफेक्टिव स्पैन जो कि इसने पहले बोला था 30 मीटर्स है. नॉट दैट, इट इज़ द इफेक्टिव स्पैन बिटवीन द फ्लोर सिस्टम एंड द मेन गर्डर्स के दरमियान इतना इफेक्टिव स्पैन नहीं है मेरा.
क्या मेरा 9 मीटर से ज़्यादा इफेक्टिव स्पैन है between main girders? No. That means, as per the codes, my impact factor is 25% or 0.25, and this is both. This holds good for both RCC bridges or for steel bridges as well. All right. So मैं impact factor लूँगी 25%. उसके बाद इसी क्लास ए एक ट्रैक्ट व्हीकल के लिए मुझे अब डिज़ाइन करना है अपना इंटीरियर डेक स्लैब पैनल, जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बना रखी है आरसी क्लास ए ट्रैक्ट व्हीकल के लिए. अब पहले मैं रब करती हूँ, फिर देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. So for class AA tracked vehicle, for class AA tracked vehicle, one wheel is placed at the center of the panel. One wheel is placed at center of panel. ये मैं किस पैनल की बात कर रही हूँ? इंटीरियर डेक स्लैब पैनल की, जो हम डिजाइन कर रहे हैं. Alright. Now since the slab is supported, हर साइड पे on all 4 sides the slab is supported by beams, and उसके अलावा ये continuous भी है and is continuous, so I'll be using Peters theory to design my interior deck slab panel. Alright, so Peters curves के का इस्तेमाल करके I'll calculate my moment coefficients and m1 and m2, and उसी से मेरे bending moments निकलेंगे along the short span and along the long span. Alright, now this is the RC class A tracked vehicle wheel load, wherein for class A tracked vehicle one wheel is placed at the center of the panel. This is the interior deck slab panel, which is supported on all the 4 sides by means of beams and is continuous. So I'll be using Peters theory to calculate the moment coefficients, और उन्हीं moment coefficients के बाद मैं अपने bending moments calculate कर सकती हूँ along longer spans and along the shorter spans. Alright, so by using Peters curves. अब ये जो A और B है हमारे theory में, let me rub it first and then I'll calculate these dimensions. हमने already discuss की थी Peters theory, वो वीडियो लेक्चर भी है चैनल पे, वो भी आप देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले. Very important Peters theory. By Peters theory, U is a B plus 2H and my V is A plus 2H. According to Peters theory, U is B plus 2H and V is A plus 2H. अब A और B क्या है? A and B are the dimensions of, these are the dimensions of tire contact area in long and short span. Alright, so this is the tire contact area in long span and this is the tire contact area in the short span. इसके अलावा U और V, what are these? These are the dimensions of load spread after allowing for dispersion through deck slab. Alright, after allowing for dispersion through deck slab, जो मेरे dimensions है, they are U and V. Alright, so an A and B are the dimensions of the tire contact area in the long and the short span, and U and V are the dimensions of the load spread after allowing for dispersion through
the deck slab. All right, now let's go on calculating these. This is my curve. Now L is 5 meters and B is 1.875 meters. Why so? This is the spacing between two stringer beams. हर एक स्ट्रिंजर बीम के दरमियान कितनी डिस्टेंस है 1.875 मीटर्स, और हर एक क्रॉस गर्डर के दरमियान कितनी डिस्टेंस है 5 मीटर्स, जो हमने पहले ही प्रिलिमिनरी assumption में, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में assume किया that I'll go on placing cross girders at every 5 meter intervals, and the spacing between my stringer beams came equivalent to 1.875 meters. तो ये वही interior deck slab panel है मेरा, where breadth is 1.875 meters, which is the spacing between two stringer beams, and this length is 5 meters, which is the spacing between two cross girders, because I assume that I'll place cross girders at every 5 meter intervals. So this is my, IRC class AA tracked vehicle wheel load, and this is my one interior deck slab panel. अब B और L का है मेरे पास, मुझे U और V को कैलकुलेट करना है, which I'll be calculating by using or by employing the M-Peters theory, using M-Peters curves. और अब U और V को पहले हमें कैलकुलेट करना है, तो U है B plus 2H. अब B मैंने पहले ही बोला, A and B are the dimensions of the tire contact area in the longer span and in the shorter span. पहले ही मैंने बोला IRC क्लास A ट्रैक्ट व्हीकल के लिए A होता है 3.6 मीटर्स और B होता है 0.85 मीटर्स. तो U कितना बनता है मेरा? B is 0.85 meters plus twice. H is the height of the wearing coat or the wearing coats, जो हमने पहले ही preliminary designing में बोला है कि we'll keep the thickness of our wearing coat to be equal to 100 mm. So U is 0.85 plus twice H, the height of our wearing coats. It is 0.1 meters. By calculations, U is 1.05 meters. Similarly, using M-Peters theory or M-Peters जो इसने बोला है, इसके हिसाब से हम V निकालेंगे. अब U और V क्या है? पहले ही मैंने बोला these are the dimensions of the load spread जब हम allow करेंगे क्या? Dispersion through the deck slab. U and V are the dimensions of load spread after allowing for dispersion through the deck slab. Now V, as per the M-Peters theory, is A plus 2H. What is A? A is the dimension of the tire contact area in the longest span, which is 3.6 meters plus twice into height of the wearing coats, that is 0.01 meters, and by calculations my V is 3.80 meters. So I calculated my U, I calculated my V, and hence the interior deck slab panel. L is 5 meters, B is 1.875 meters, U is 1.058 meters, and V is 3.80 meters. And U and V are the dimensions of the load spread after allowing for dispersion through the deck slab. Alright, तो ये है मेरा interior deck slab panel, and this is as per the IRC class A tracked vehicle wheel load. अब हमारा second step बनता है that we have to calculate moment coefficients, और moment coefficients हमें मिलते हैं Peters curve से. अब Peters curves को कैसे पढ़ते हैं हम? जब हमारे पास ratios हो, क्या क्या? U by B, V by L और K. तो U और V तो हमने कैलकुलेट किया. अब चलते हैं और करते हैं कैलकुलेट ये सब बाकी चीजें. ऑलराइट, अब U, since L है 5 meters, we know L is 5 and B is 1.875 meters. Alright, L is 5 meters, B is 1.875 meters. So U by B क्या बनता है? अभी अभी हमने U कैलकुलेट किया 1.05 meters. So my U by B is 1.05 divided by B is 1.875. So this as per calculations is 0.56. And उसके बाद हमें U by B के अलावा V by L की भी ज़रूरत है. V अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 3.80, उसके बाद L है ही 5. So V by L by calculations is 0.76, this is 0.56, this is 0.76. इसके बाद हमें K calculate करना होता है. अब काफ़ी students यहाँ पे confuse होते हैं, because some books say it's L by B, some books says it's B by L, तो students confuse होते हैं. But आज आप यहाँ से बाद आप confuse नहीं होंगे. आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि K is the ratio of short span by long span.
L by B by L को याद रखने की ज़रूरत नहीं है. K is essentially a ratio between short span to long span. अब यहाँ पे इंटीरियर स्लैब डेक स्लैब पैनल जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, ये उसकी डायग्राम है और इसमें शॉर्ट स्पैन कौन सा है, ये वाला, और ये लॉन्ग स्पैन है. सो K is 1.875 which is my shortest span divided by long span which is 5. Alright. और by calculations my K is 0.375. लेकिन इसके बाद आप ये भी याद रखिए कि एम्पीजर्स कर्व्स में हम K और 1/K का भी इस्तेमाल करते हैं कर्व्स को पढ़ने के लिए. तो अगर K 0.375 है तो 1/K है 2.66. ठीक है. So after employing the Empedur's theory, I calculated my U, my V, then my U by V, V by L, and then subsequently K, which is the ratio between short span to the long span, and 1/K उसका reciprocal. उसके बाद I have to use the curves and I have to find the moment coefficients M1 and M2. अब के यहाँ पे अब किस वहाँ पे बहुत सारे कर्व्स है फॉर के 0.6 फॉर दिस. अब हम कौन सा वाला कर्व पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फॉर विच इज़ के का वैल्यू हमारा 0.375 निकला तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 0.4. सो विल रीड दोज कर्व्स विच फॉर विच के इज़ 0.4. मेरे पास u by b का वैल्यू भी है, v by l का वैल्यू है, k इज़ 0.4, 1/k इज़ 2.66. सो आई go on checking the Piaget's curve and finding my subsequent coefficients, that is M1 and M2. पिछली वीडियो लेक्चर में भी जहाँ पे डिस्कस किया था हमने ये एम्पीजर्स थ्योरी, उसमें मैंने आपको कर्व्स दिखाए थे. कुछ इस तरह के कर्व्स होते हैं M1 कोफिशिएंट और M2 कोफिशिएंट को इस्तेमाल करने के लिए. ये कुछ ऐसे कर्व्स होते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज मोमेंट कोफिशिएंट M1 एंड M2 फॉर K इज इक्वल टू 0.7. लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है फॉर K being 0.4. So this one. So इस तरह के कर्व्स होते हैं ये. इस साइड से वैल्यूज ऑफ U by V, इस साइड से वैल्यूज ऑफ V by L, और K है ही. These curves are for K is equal to 0.4. और इन्हीं कर्व्स को पढ़ के for various ratios of U by B or V by L we'll go on finding our moment coefficients M1 and M2. यहाँ पे लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जो भी हम वैल्यू पढ़ेंगे that will be M1 into 100 and this will be M2 into 100. अब इन कर्व्स के को पढ़ने के बाद and for these values I got my moment coefficients as, I'll write it down for you. Let me rub it first. So my M1 is based on Piaget's curves, which we read for the value K is equal to 0.4 and for the ratios U by B and V by L, which we calculated. And we have M1 by Piaget's curves as 8.5 into 10 raised power minus 2, and M2 we have 0.9 into 10 raised power minus 2. After having these moment coefficients M1 and M2, we'll go on and we'll be calculating our bending moments along the short span and along the long spans.